Hello, good morning. Welcome all of you to the Aditi Science School. Today in Sanskrit lecture we shall be study Unit 3 of Standard 9. Okay, in last two lecture we have studied Unit 3. So till now we study that King Bhoj ruled over Dharanagari. King once is seated in his balcony and saw a newcomer and unfamiliar young man into the street. So to know the identification of the newcomer, he called him, and after that said that, okay, what is your name? Yeah, who are you? So the young man said, I am a Ghat Pandit. So the king said, what does the Ghat Pandit mean? The king, very much surprised to see his identification, to know further that the young man was really an intelligent person. The king made more and more conversation with them. So thus the conversation between the king and the young man go ahead and ahead. And when they reached, the young man says, the king says to the young man, if you behave like the bee, I shall be the sun. तो राजा भोज युवक को कहता है कि अगर तुम बी बन जाओगे, ओके, तो मैं सन बन जाऊंगा. एंड बिकमिंग द सन you have to present into the flower at the time of the sunset. The young man replied that if you be the sun, I shall be the Rahu, and the Rahu swallow the sun. Okay, till that we have seen the lesson. Today in this lecture we shall go ahead. Okay, both said Kinchita Uche. The king both said to the young man, Kinchita means slightly, Uche loudly. Slightly in a louder voice. Bhavanah Rahu Sveta Aham Rahu Rubhaya Tubhyam Danam Dashyami. Bhavana, it Rahu Sveta, if you be a Rahu, Aham, I, Rahu Rupaya, in the form of Rahu, Tubhyam, you, Danam, in a donation, Dashyami, give up. If you are Rahu, so I will give money to you who as in form of the Rahu. कि अगर तुम राहु हो तो राहु के रूप में मैं तुम्हें दान में दे दूंगा. दान ग्रहणेन तवाय गर्व निश्चयेन शांतम भविष्यति. दान ग्रहणेन, दान मतलब डोनेशन या तो चैरिटी, ग्रहणेन एक्सेप्टिंग, तवाय मीन्स योर्स, गर्वम pride, निश्चयम डेफिनेटली, श्योरली, शांतम क्लाम, भविष्यति shall be या तो will be. कि this pride of your will surely be subdued after accepting the donation या तो charity. कि डोनेशन या चैरिटी एक्सेप्ट करने से तुम्हारा ये जो गर्व है वो गर्व श्योरली शांत हो जाएगा. कि दिस प्राइड ऑफ योर विल श्योरली बी सबड्यूड आफ्टर एक्सेप्टिंग द चैरिटी. युवक विहस्य चातुर्येन, युवक द यंग मैन, विहस्य, विहस्य मतलब लाफिंग, चातुर्येन बाय द cleverness of the king, smiling cleverly. The young man laughed by the cleverness of the king. कि यदि भवानः दानी तहि अहम संतुष्टः. कि यदि if भवानः you दानी, दानी मतलब डोनेटर,
या तो चैरिएटर कि इफ यू आर अ डोनेटर तभी देन अहम आई संतुष्टः कंटेंटमेंट पर्सन या तो सेटिस्फाइड पर्सन कि इफ यू प्रैक्टिस चैरिटी कि अगर तुम दान दोगे ने तो आई एम द मैन कि हु इज अ कंटेंटमेंट हु इज सेटिस्फाइड ओके अगर आप दानी बन जाओगे ने तो मैं संतोषी नर बन जाऊंगा संतोषी मानस बन जाऊंगा भवतः दानस्य प्रयासः निष्फलं भविष्यति भवतः योर दानस्य के चैरिटी का प्रयास एफर्ट ट्राई निष्फलम फेलम भविष्यति will be कि your effort of charity will be fruitless या तो failure कि आपका दान देने का जो प्रयास है वो निष्फल हो जाएगा सर्वतः अलुब्ध अहम भवत दानम न ग्रहीष्याति सर्वतः by the all means अलुब्ध free from the greed के सभी प्रकार से लोभ से मुक्त होकर अहम आज भवतः योर दानम चैरिटी न ग्रहीष्यात डिड नॉट एक्सेप्ट या तो विल नॉट एक्सेप्ट बीइंग एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम अ ग्रीड आई शैल नॉट टेक मनी ऑफर्ड इन अ चैरिटी बीइंग एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम द ग्रीड I shall not accept your donation. एवं उत्तरो उत्तरम विवादः तयोर्भुज युवको मध्ये यदा संतोषस्य विषयः समुपस्थतं तदा समागते संतोषम शान्तं भवति इति वचन अनुसार स्वयमेव शान्तः एवं उत्तर उत्तरम लाइक दिस के इन दिस वे विवाद तयो के द कन्वर्सेशन बिटवीन देम भोज एंड युवको द किंग भोज एंड द यंग मैन मध्ये बिटवीन यदा व्हेन संतोषस्य विषयः ऑन द टॉपिक ऑफ द कंटेंटमेंट या तो ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द कंटेंटमेंट समुपस्थितः रीच्ड तदा एट दैट टाइम समागते कंसिस्टः संतोषे इन द कंटेंटमेंट सर्वे ऑल द थिंग्स शांतं भवति बी क्लाइम्ड ऑटोमेटिकली इति वचन अनुसार बाय दीज वर्ड्स विवादो अपि द कन्वर्सेशन बिटवीन देम स्वयमेव ओवर Santah Klam. In this way, the course of argument going on between Bhoj and the young man reached when the topic of contentment came up. So, according to the words, according to the maxim, when contentment comes, everything becomes quiet. The argument also automatically stopped between them. कि उनका कि जब वो ऐसे एक दूसरे को आर्ग्यूमेंट करते करते जब वो कंटेंटमेंट संतोष सब्जेक्ट पे आते हैं तो ऐसी मैगजीन है कि सब कुछ संतोष के अंदर समा जाता है तो उनका ये जो आर्ग्यूमेंट था वो भी अपने आप स्टॉप हो गया रुक गया अस्ते चतुरम ज्ञानेन गुणेन च उपतितं पंडितम युवकम प्रणव्य धाराधिपति भोजराज अवदतः अय घटपंडितः गुणपूजके धारादेशे भवतं स्वागतम् अस्ति अन्ते फाइनली चतुरः क्लेवर ज्ञानेन नॉलेजेबल गुणेन वर्चुशियस च उपतितं पंडितम के seeing that पंडित युवक the young man प्रणम्य bowed down धाराधिपति the king of the धारा भोजराज king भोज अवदत said अयि घट पंडितः ओ घट पंडित गुण पूजके worship of quality धारा देशे the country of the धारा भवतः your स्वागतम अस्ति वेलकम
You are welcome in a Dharadesh, the worshipper of quality. Finally, going down, the young scholar who was a clever and innovated with knowledge and virtuous both the ruler of the Dhara said to the young man, O Ghat Pandit, you are welcome in the country of Dhara, worshipper of quality. गुणपूजके धारादेशे भवतः स्वागतमस्ति भवान् विजयी जातः भवान् यू हैव विजयी विक्टोरियस जातः बिकम यू हैव बिकम विक्टोरियस संतुष्टं जनम न कोऽपि पराजेतुम् अर्हति संतुष्टं जनम कंटेंटमेंट पर्सन न कोऽपि नो वन कैन Parajitum defected. No one can defect a person who is contented या who is satisfied. यतो हि संतोषस्य एव पुरुषस्य परम निधानं वर्तते. सो यतो हि सो संतोषस्य contentment is पुरुषस्य man परम बेस्ट निधानम ट्रेजर वर्तते है. तो बिकॉज रियली कंटेंटमेंट इज द ग्रेट ट्रेजर ऑफ अ मैन. बिकॉज रियली इन रियली कंटेंटमेंट इज द ग्रेट ट्रेजर ऑफ द मैन. With this chapter will end here. In next video we will see the next chapter of the Sanskrit. Have a nice day.